Today, we are incredibly proud of the discipline and dedication and hard work displayed by your teachers and students, whose relentless efforts have been instrumental in making this event a remarkable success till now. The commitment and passion for excellence are truly inspiring. It is through their tireless contributions that we are able to celebrate this achievement today successfully. Together, we have worked hand in hand, day and night, and it is through this spirit of collaboration that we have achieved what we have achieved today here. सुमन मैम, यहाँ से अंदर आते वक्त मेन एंट्रेंस से कुछ अलग सा नोटिस किया था। क्यों मैम, कुछ नोटिस करना था क्या? बनिए मत, मैंने देखा था। ময়ো দেখিছোঁ য'ত ক্লিক হৈ আছে কিবা কিবি। क्या कर रहे थे आप? विजय सर अमित सर के साथ सेल्फी ले रही थी। अच्छा, Yes. कहाँ ले रहे थे आप सेल्फी? बताइए बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। याद नहीं? नहीं। क्या हमने नोटिस किया है एक सेल्फी स्टैंड मेन एंट्रेंस के पास? क्या हमने किसी ने नोटिस नहीं किया? बट सुमन मैम ने किया था। सुमन मैम ने बिल्कुल नोटिस किया था और सेल्फीज भी खिंचवाई थी। Our teachers, our art faculty, Pyali ma'am, and our IT expert Bapi sir, with all the hard efforts of our children, have prepared only for you a beautiful selfie stand to make this day a memorable one with beautiful selfies that you can post on your social media. स्पंदन 24 और उसमें हम सभी बच्चों का योगदान दिखता है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, जितना भी सेल्फी स्टैंड में ड्राइंग्स है या फिर डिज़ाइंस है, everything is based on the theme of today's event. Not to forget our vivacious principal ma'am, her deliberate suggestions and guidance were pivotal in shaping this event for today. We should take that privilege to thank our beautiful Paramita ma'am also, who was always ready to assist us at any time and ensured that we had everything needed to execute this event seamlessly. Now, it's our turn, dear parents and lovely audience. As a part of SVA family, we all share the responsibility of upholding the respect and discipline of our institution. So, let me make a humble request that we can make ensure a smooth and enjoyable experience for all that we have planned for us. We humbly ask for your cooperation with a few simple but very important guidelines. Dear parents, dear audience, can we please refrain from eating anything inside the auditorium? Can we maintain the cleanliness in the atmosphere of the auditorium? If we have had a snack also, kindly can we dispose the wrappers or the packaging in the designated bins? Can we keep the pace and that space beautiful and inviting for everyone around us? We can do that, right? Can we do that? Audience, Can we do that? Of course we can. We are Vivekans, right? And as well as, I would like to request the parents of our performers, please note that our children, after their performances, will not be released immediately to you all. They will remain with us
with your lovely teachers. Absolutely, ma'am. Kindly refrain from gathering in front of the green room. Our performers are getting ready there. Our performers are being prepared to make you enjoy this thrilling experience of today's musical. So we can help them to arrange the program in a more smooth manner by not gathering in front of the green room's door. Rest assured, our little ones are in safe hands. They will be handed over to you as per the previously given instructions from their respective class teachers. Kindly bear with us patiently. Ma'am? जी बिल्कुल मैम। देवी और सज्जनों, आप सभी अपने बच्चे हमें रोज़ाना सौंपते हैं और हम उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। आज हम पर विश्वास करें। आज भी आप अपने बच्चों को हम पर सौंप दें, उनका ख्याल आज हम रखेंगे और बेफिक्र होकर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। প্ৰিয় অভিভাৱকসকল, আপোনালোকক নিশ্চয় আমাৰ শ্ৰেণী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সময়খিনি জনাই দিছে। যেতিয়াই তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান শেষ হ'ব, লগে লগে আপোনালোকে তেওঁলোকক ল'বলৈ ভিৰ নকৰিব। আপোনালোকক যি নিৰ্দিষ্ট সময়ত বা যি নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত ৰ'বলৈ কৈছে, সেইখিনিৰ পৰাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰেক্ষাগৃহত যাতে কোনো পেকেট বা যিকোনো খোৱা বস্তু পেলাই লেতেৰা নকৰে। बिल्कुल देविका मैम। আমাৰ এটা অভ্যাস আছে, মোৰ আছে দেই। Yes. আচলতে এইটো বেয়া অভ্যাস বুলি ক'ব নে ভাল অভ্যাস বুলি ক'ব, সেইটো অভিভাৱকে ক'ব। মোৰ কি হয়, কেতিয়াবা ডাষ্টবিনটো ক'ত আছে বিচাৰিয়ে নাপাওঁ বা উঠি যাবলৈও এলাহ লাগে। তেতিয়া কি কৰোঁ, মই দেখিছোঁ মোৰ এই কামটো বহুতে কৰে, বেগটোতে সোমাই ৰাখোঁ ন, ৰাখেনে? নাৰাখে, তাৰমানে মোৰ এইটো বেয়া অভ্যাস। তাৰপিছত যেতিয়া ওলাই যাওঁ তেতিয়া ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ। बबीता मैम, बापूजी ने अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान का, याद है ना? ओके। 2014 নে 15 চনত। ओके। स्वच्छता ही सेवा है। अक्टूबर। स्वच्छता ही सेवा है क्योंकि गंदगी जानलेवा है। हम एक परिवार हैं और यह परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, इसके लिए आप अपने आसपास स्वच्छता का संपूर्ण ध्यान रखें। यह परम आवश्यक है। Moment we have all eagerly waiting for has finally arrived as we prepare ourselves for the performance that will captivate both our hearts and minds. Allow me to set the stage for what promises to be an unforgettable experience. And for the musical, our theme for today is Boonde Hayat Bhi कयामत भी। beautifully reflects the delicate balance of life. How a single drop, a boon, can symbolize both the vitality of existence, hayat, and the destructive force of nature, qayamat. It is a theme that speaks to the duality of life itself, the creation and the loss, the nurturing and the unraveling, the hope and the despair. Suman ma'am, आपको क्या लगता है? देविका मैम, बचपन में सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब रात भर बारिश होती थी और सुबह स्कूल जाने के टाइम बारिश बंद हो जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? Always. Getting a sudden leave because of excessive rainfall यस। many a times makes us happy as well. Rain, it's a timeless beauty, a muse for poets and dreamers alike. It's nature's most powerful gift, gentle,
nurturing, transformative. It is the soft whisper of the heavens, the life-giving embrace that quenches the thirst of earth and breathes vitality in every living being. Rain carries with it a melody of renewal, washing away the old and ushering in fresh beginnings. Is rain always beautiful? क्या कहती है सुमन मैम आप? बिल्कुल, बारिश की हर एक बूंद अपने आप में एक कहानी कहती है। यह जहाँ भी जाती है अपना अस्तित्व भूल जाती है। কি হয় বৰষুণ? ববিতা মেম কিবা ক'বনে? বৰষুণ প্ৰকৃতিৰ এক অনবদ্য উপহাৰ হয়নে? বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ। আমাৰ কোন কোন অভিভাৱকে বৰষুণ ভাল পায় বাৰু? যিসকলৰ পানীৰ অলপ অভাৱ তেওঁলোকে ভাল পায় হয়নে? বৰষুণ প্ৰকৃতিৰ এক শক্তি, ইতিমধ্যে ক'লোঁ, যিয়ে যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ কল্পনাক মোহিত কৰি ৰাখিছে। বৰষুণে ন ন আশাৰ জোৱাৰ আনে। প্ৰাকৃতিক জগতৰ এক ভয়ংকৰ শক্তিৰ সোঁৱৰণিও কিন্তু বৰষুণ। কেতিয়াবা বৰষুণ সৃষ্টিশীল, আকৌ কেতিয়াবা ধ্বংসাত্মকো হ'ব পাৰে। পাৰেনে নোৱাৰে? কেতিয়া? আমাৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে ভালকৈ জানো কেতিয়া। আকৌ শুকান মাটিলৈ জীৱনদায়ক পানী কিন্তু বৰষুণেই আনে। কেতিয়াবা ই ধ্বংসাত্মক বানপানীৰো সৃষ্টি কৰে। গতিকে এফালে বৰষুণ হৈছে নৱীকৰণ আৰু সজাগতাৰ চূড়ান্ত প্ৰতীক। ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ মলিৰ লেতেৰা আঁতৰাই আমাৰ চৌপাশৰ জগতখনলৈ সতেজতা আৰু সজীৱতাৰ অনুভূতি আনে। গছ গছনিক পুষ্টি দিয়াৰ লগতে আমাৰ পানীৰ উৎসবোৰ পুনৰ ভৰাই তোলে। আনফালে আকৌ বৰষুণ ধ্বংসৰো কাৰণ হ'ব পাৰে। বৰষুণৰ সেই নিৰ্মল শক্তিয়ে কেতিয়াবা ক্ৰোধৰ ৰূপ লৈ আমালৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনে। কিন্তু তথাপিও বৰষুণৰ এক অদ্ভুত সৌন্দৰ্য আছে। ছাদত বৰষুণৰ টোপালৰ শব্দ, বৰষুণেৰে তিতি থকা সেই পথবোৰৰ দৃশ্য, ভিজা মাটিৰ গোন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদিত বৰষুণৰ এক মন্ত্ৰমুগ্ধ ৰূপ আছে। গতিকে এই সকলোবোৰৰ সংমিশ্ৰণত আমি বুন্দে নাটিকাখনত দেখা পাম। আহকচোন প্ৰকৃতিৰ এই অনবদ্য উপহাৰ বৰষুণৰ এই বিভিন্ন ৰূপ আজি আমি উপভোগ কৰোঁ। Here to perform for us, let us welcome our performers with a huge round of applause. Calming souls, nature's symphony unfolds. What bliss, the scent of wet earth, the rhythm of raindrops. Doesn't it evoke memories of childhood laughter and playful splashes in you, Prithviraj? Indeed, Priyanki. And the smell of ginger tea in the morning, and that of khichdi for lunch, accompanied by the patter of rain on the roof. Blissfully yummy. जैसे कि प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, वर्षा की रात में सब कुछ नया होता है। You know what? Rainy days always make me want to curl up within blankets with a good book. Well, what about you? मुझे तो बारिश में पकोड़े और चाय की याद आती है। I have always loved watching the rain create miniature rivers on the streets, and the boys in our neighborhood sailing paper boats in them, and overjoyed aunties collecting rainwater in buckets for all the household washing. Ha ha ha! But have you ever thought that this rain, which confers blessing upon mankind, can sometimes wreak such havoc that it takes a heavy toll on lives? কবি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে বৰষাৰ পানীত জীৱন সজীৱ হয়। I have often pondered on rain's dual face, bringing life to parched lands, yet destroying homes, destroying hopes, and destroying lives. Tente ahoksun,
Let's delve deeper into the mysteries of rain and uncover its appalling face that it wears under the veil of his soft, gentle caress that often greets mankind. हाँ, आइए हम भी बारिश के इस दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें. Yes, let's lift the curtain and reveal the turmoil that lies beneath its serene surface. Where the life-giving droplets become devastating deluges. और प्यारी बारिश की एक आवाज एक डरावनी आंधी में बदल जाती है. And the soothing melody turns into a deafening crescendo. Welcome everyone to the wonders of rain. Boonde, kabhi hayat, kabhi kayamat. Raindrops, sometimes life-giving, sometimes destructive. So let the musical begin and celebrations unfold with a delightful chorus. अरे वो যেতিয়া শিমুল পলাশ বতাহে বাটত ঢলি পৰিব বতাহে কোমলকৈ ঢোল দিব আমি সকলোৱে আখৰাৰ শপত লৈ একেলগে সুখত থাকিম শিমুল পলাশ বতাহে বাটত ঢলি পৰিব বতাহে বুকুত মৰমেৰে ঢোল দিব আমি সকলোৱে আখৰাৰ শপত লৈ একেলগে সুখত থাকিম চাবি চাবি তৰিৰ সুৰত গাম একেটা গান টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবিরে গায় তুই যে আমার একলা আকাশ মেঘ সুরে চায় রে মেঘ সুরে চায় রং বেরঙের বেলোয়ারে সাথী রঙা রঙ তোর মুখেতে লুকিয়ে আছে জীবন ভরে সুর রে জীবন ভরে সুর পলা করিব বাতক কব বতা যাকে কাকি মামি একেলগে কপত লৈ আনে শিমল পলা করিব বাতক শিহৰণ তুলি বুকুত কাকি মামি একেলগে কপত লৈ আনে কাম আমি চাই চকুৰ পিনে একে সুৰৰে গায় কাপোৰ টুকুৰ ছবিরে গায় তুই যে আমার একলা আকাশ মেঘ সুরে চায় রে মেঘ সুরে চায় কাপড়ে টুপুরে বৃষ্টি টুপুর জল ছবিরে গায় তুই যে আমার একলা আকাশ মেঘ সুরে চায় রে মেঘ সুরে চায় धमक मुझे बदला के डंके चमक चमक देखो बिजुलिया चमके मन धड़काए बलरवा मन धड़काए बलरवा मन मन धड़काए बलरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ
जलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए ये मन मचल मचल नहीं चल संभल संभल गए दिन बदल तो घर से निकल बरसने वाला है अब अमृत जल कोई धागे दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ गिर गिर आए बदला घन घन और काए छाए बदला चमक चमक तुझे बदला के डंके चमक चमक देखो बिजुरिया चमके मन धर आए बदलवा मन धर आए बदलवा मन मन धर आए बदलवा comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Yes, indeed. As John of Dyke said, rain is grace, rain is the sky descending to the earth. Without rain, there would be no life. I remember my childhood days when the rain I saw, I just loved to dance in it. आप क्या करती थी सुमन मैम? कागज की नाव बनाकर पानी में तैराती थी। क्या आपने किया है? Yes, जिन्होंने किया है प्लीज हाथ उठाएं। I did. बचपन की यादें ताजा हो गई। We really have so many memories attached to rainfall. The beauty of this rain, the water, the drops falling on our head, getting us wet when we don't have umbrellas, going from our schools or coming to our schools. The days when we brought umbrellas, we had no. The days we had umbrellas, we did not have umbrellas. वहाँ तो सच में बारिश होनी ही है। बिल्कुल। और आज Rainy seasons, I Yes. must say, so unpredictable. और आज हमारे बच्चों ने जो गान प्रस्तुत किया, सच
आज फिर से बारिश की बूंदों ने अपना जादू बिखेरा है। रुकिए रुकिए, स्टॉप, वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा, कमिंग टू द स्टेज। अभी हमारे बच्चों को आने तो दीजिए, अभी तो वो आई ही नहीं है। क्या आज कुछ खास है? बिल्कुल, वो खास मैं बताऊंगी नहीं, शब्दों में हम बोलेंगे नहीं, हम दिखाने वाले हैं। तो हम चुपचाप यहाँ से कट लेते हैं, निकल लेते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते। थैंक यू। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে ক'লে মই কেৱল এটাই শব্দ ক'ব, এটা বাৰী বাক্যৰে ক'ম, ধৈৰ্যৰ ফল সদায় मीठा होता है। মিঠা, আৰু আমি সেয়া মিঠাই ৰাখিব দিওঁ, তিতা নকৰোঁ। ধন্যবাদ। Get your umbrellas and your raincoats and time to float your paper boats. It does ring a bell, doesn't it, Prithviraj? Borokhar Gan, Borokhar Bani. Yes, it just brought back to me the gleeful memories of my childhood. I still remember, as a kid, dancing in the gentle rain while splashing the puddles provided such a relief from the heat. Oh, absolutely. Dancing in the rain without any worries has got to be the best memories from my childhood. Well, today, let's relive those carefree memories with our smallies. तो चलिए नन्हे मुन्नों के साथ बारिश की ये यादें ताज़ा करें. Our little ones are ready to splash into the fun. देखो पृथ्वीराज, बारिश की धुन पर नाचते हुए ये नन्हे कलाकार. Look at our little performers dancing to the rhythm of rain. और ये प्यारे बच्चे बारिश की खुशियों हमारे बीच बिखर रहे हैं. These sweet children are spreading joy and happiness. বৰষাৰ পানীয়ে শৈশৱৰ স্মৃতি কঢ়িয়াই আনে. Really, rain brings back childhood memories. बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिशों का बोसा है. जल 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 बहता जल. नारे 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 बरसो रे मेघा,
As the first droplet of rain descend the earth, euphoria blooms in all our hearts. Nature wraps itself in the pleasure of shower, and every soul dances to the rhythm of the downpour. Indeed, the joy of playing in the rain with friends has no comparison. The gentle caress of rain often awakens the child in every one of us. Don't you think so? Absolutely, Priyanki. So today, we have with us our little performers who bring with them the mischief and delight of rain-filled days. तो आइए हम भी बचपन की यादों में खो जाएं। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। Zooby dooby zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवाने किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, Zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. रिम झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियाँ। भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, Zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा इतरा के गा रहा। हैरान अकेली तन्हा मुझे छू लिया तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Prithviraj, have you ever realized that clouds, mind and rain form a harmonious trio? Yes,
They create balance and serenity, inspiring our young minds. So, let's delve deeper into this harmony, where clouds evoke creativity, rain calms our thoughts, and mind finds solace. Indeed, a perfect blend of nature's symphony. Clouds mirror our thoughts, reflecting life's journey. And rain washes away worries, calming the mind, Perfect harmony. reflecting life's beauty. Clouds nourish our imagination, sparking creativity. While rain replenishes our soul with tranquility, A symphony of balance. echoing serenity, So, let's cherish this harmony. and embrace nature's rhythm through a mesmerizing presentation by the students of Class 4, showing the symphony of clouds, mind, and rain. মনোমর মেঘের সঙ্গী মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে কচিত কচিত চকিত তড়িত আলোকে মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে কচিত কচিত চকিত তড়িত আলোকে ঝনঝন মঞ্জির বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে কল 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 মন্ত্রে নির্ঝরিণী ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে উচ্ছল ছল ছল তটিনী তরঙ্গে বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে উচ্ছল ছল ছল তটিনী তরঙ্গে মনোমর ধায় তারি মত প্রবাহে কালো তমাল অরণ্যে মনোমর ধায় তারি মত প্রবাহে কালো তমাল অরণ্যে ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে
শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 Prithviraj, rain, is such a mystery. One moment, it's playful, tugging at our hearts with a carefree tune. And in the other moment, it can bring such devastating storms that shake us terribly, terribly to our core. Isn't that the beauty of it? The same rain that brings joy can also reveal its darkness. As a great poet said, तुम ना चाहो मैं ना चाहूं कौन भाग्य विधाता रोके वर्षा के स्वरूप में भी कौन ये तूफान रोके. And today our performers bring this transitory aspect of rain to life. से पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे. आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना. क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू. ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू. तू धूप है झम से बिखर तू है नदियों बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही. क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू. ये रे पावसा मी तुला देते पैसा पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा. घुमाकून 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 चलो सारे ढाक घुमाकून मिलके हम बादलों की खींचे धूम. अरे पहली बरसात मेरे झूमे नाचे साथ में ढोल नगाड़े की ताल पे. ढक्कुमकुम चलो सारे ढक्कुमकुम मिलके हम बादलों की खींचे दुम. पहली बरसात मेरे झूमे नाचे साथ में ढोल नगाड़े की ताल पे. अरे
तेरे हैं ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबोदाना मेरा हाथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल Mighty heavens, the rains, like Shiva's cosmic dance, bring destruction upon us. Our humble abodes, our livelihoods, all laid waste. Indeed, the fury of nature leaves us mortals helpless. Our wisdom, our strength, all seem insignificant before the torrential downpour. We toil, we strive, yet in an instant, our efforts are all washed away. The rains remind us of our limitations, our vulnerability. But even amidst devastation, we find solace in prayer. We beseech the Almighty to calm the tempest, to restore balance and peace. May our supplications be heard. May the rain cease and the sun shine bright once more. Ameen. May we find strength in resilience and unity. Civilizations, empires, once mighty and grand, have been swallowed by the relentless force of nature. The Indus Valley, a cradle of ancient culture, submerged beneath tides. The lost city of Atlantis, a mystery, vanished below the waves. This is the tale shrouded in the destructive power of water. Even the divine are not spared. Witness the infant Krishna carried by his father Vasudeva, braving torrential rain and raging floods amidst the thunder. चकारचण्डताण्डवं तनोतु शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्नितिं लोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनिर्धगद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटकट्टभावते किशोरचन्द्रशेखरे रति
दग 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू हो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोहे तू रंग दे बसंती यारा मोहे तू रंग दे बसंती मोहे 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 रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोहे रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोहे रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती यार Centuries later, in a peaceful village, child listens to the tale of Noah's Ark, unaware of the impending doom. Long ago, Noah built an ark, a divine warning that saved him and the creatures. But for many, the flood gives no warning. Irony, a cruel mistress weaves her web. The village, a picture of harmony, is on the brink of a catastrophe. The flood, a silent, relentless force, creeps in. The serene village transforms into chaotic dystopia. কেউফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বন উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহাল পলকতি উটিয়ে মোক কৰিলে কঙাল Our fields, our animals, everything is gone. United to your destinies with a new country from this tragedy. What did you do? Why did you let this happen? My parents, my sisters, and now maybe me. क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं उन बिन कटे न रहना उन बिन आवे न एक पल चैना उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो भरे भरे देना झरे भरे देना मोहे देना सुनी नहीं देना भरे भरे देना भरे भरे देना झरे भरे देना मोहे देना सुनी नहीं देना भरे भरे देना The storm is gone, but we remain, and so we begin again. This is the tale of rain, its fury, its mercy, its lesson. To accept is not to surrender, but to find strength in the cycle of life, in the renewal it brings. Rain really has a way of bringing things to life, doesn't it? For some, it's just water from the sky. But for our farmers, it's everything. Rain is hope.
It's a promise. It's a reason for them to keep going. Absolutely. जल जल ही नहीं, जल जीवन है। जल ही तो आशा की उभरती नई किरण है। But just imagine standing in the fields day after day with nothing but dry earth beneath your feet, gazing up at the sky, hoping, waiting for even the faintest sign of clouds. But what happens when those clouds disappear? When days turn into weeks and weeks into months and still no rain? No rain. सच में जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है? The crops wither away, the soil cracks, and the farmer's heart breaks. As the great Assamese poet Jyoti Prasad Agarwala dwells on the cry of the earth battling with Hukan Mati, Jolanto Akash, the drought ravages not just the land, but the farmer's family, their livelihood, their dreams are all shattered. That's what today's performance of class 9 and 10 is all about. This journey of the farmers, from the waiting for rain to the arrival of the first drop. So let us sit back, enjoy and celebrate the rain with them. পৃথিবীত কিছু শক্তি আছে যি কৃষক আৰু মাটিৰ যুগ যুগৰ সম্বন্ধত অন্তৰায় হ'ব খোজে। তেতিয়া অসহায় কৃষকে গায়, ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই। খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই, মাটি বিনে অসহায়, দয়া কৰা দয়া শিলাই। ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই, চৰণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই, মাটি বিনে অসহায়, দয়া কৰা দয়া শিলাই। রোদ বৰষুণ কাটি কৰি ঘাম পেলাই সহ কৰি তোমাৰ বুকুৰ সোণ চপাওঁ আনে নিয়ে কাঢ়ি। ধৰিত্ৰী আই মোৰ, আমাক তুমি মেৰিবা, তোমাৰ চেনেহ দিনে আই আমি নিৰূপাই। ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই, চৰণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই, মাটি বিনে অসহায়, দয়া কৰা দয়া শিলাই। ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই, চৰণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই, মাটি বিনে অসহায়, দয়া কৰা দয়া শিলাই। নাহি বিবান ভুকিব ধান, উপচি পৰক আমাৰ ভঁৰাল। নাহি বিবান ভুকিব ধান, উপচি পৰক আমাৰ ভঁৰাল।
हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंतिम जीत उसी की रहे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अंबर है रे। तू आजा रे हर तरफ दुख दर्द है आंसू है मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है। कुदरत ये सितम ढाए मानव अब कहाँ जाए। है कहीं सैलाब कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तो या बदला ये मौसम है। कुदरत ये सितम ढाए मानव अब कहाँ जाए। पानी प्यासा
लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है। देख लो लहरता मानवता का परचम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। सूखे सपने सूखा है अब कल, इतनी सी ये कहानी है, बंजर ये जिंदगानी है। बस आँखों में अब पानी है, बस आँखों में अब पानी है, पानी है। The magical rain. The sky darkens, the first drop fall, and suddenly it's like the whole world comes alive. Yes, here it comes. Shoes will be forgotten, umbrellas left behind, and soon enough we will see kids splashing in puddles, and even grown-up will dance, arms outstretched, catching every drop. The celebration begins. चल हो चल रे झमझमा झम बिस्टी भिजी चल हो काला रे झमझमा झम बिस्टी भिजी चल
The onset of rain in Assam brings new hope and cheer in the life of Assamese farmers, signaling a season of abundance and prosperity. Indeed, Priyanki, the rains rejuvenate our land and our hearts. Tonight, let the rhythmic beats of the dhol and the melodic whispers of the pepa transport you to the lush fields and the tranquil rivers of Assam. So, let the harmony of Bihu touch our souls and continue to echo throughout the night.
we have seen the transformative power of rain. और जब बारिश आती है तो जीवन की धारा फिर से बहने लगती है. Rain, you are simply magical. So as we leave here today, let's carry the spirit with us. Let's salute the farmer's struggles, his resilience, and the power of hope. Because in the end, life is really like a harvest. It's full of waiting, wonder, and the most beautiful moments of celebration. Thank you for joining us today. देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं. तो अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा वार्म अप. जब मैं एक कहूँगी एक ताली, जब मैं दो कहूँगी अगेन एक ताली. रेडी? एक कहने पे एक ताली, एंड जब मैं दो कहूँ तो भी एक ताली. रेडी? एक, दो, 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 एक, दो. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये ताली आज हमारे नन्हे मुन्ने सितारों के लिए था. और आज देविका मैम, मैं सोच रही हूँ कि आज ही जाके डांस क्लास ज्वाइन कर लो. ऑफ कोर्स हमें तो इतना नहीं आता. हमारे बच्चों ने जो आज दिखाया, हम अभिभूत हो गए. As the curtain falls on the magnificent celebration of Spandan, the vibe of Vivekans, we are reminded of the timeless truth. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Every good thing must come to an end. So, as a farewell, but as a cherished memory that we carry forward. First and foremost, I would like to express our deepest appreciation and thank you to the guest of honor, our chief guest, our esteemed dignitaries who graciously took their time out of their busy schedule for our event. A heartfelt thank you to the ITA Machkoa team for their utmost cooperation, ensuring the smooth technical execution of our event. I extend my sincere thank to our school administration for their constant support, vision, and guidance. A special word of thanks to the video editing team whose meticulous work behind the scenes ensured that every moment of this event was captured and presented beautifully. A special thanks to our LED content creators, Ritesh sir, and our ex-students, Dhrubojyoti Banerjee, Trishanjit Paul, Subhojit Das, Tusharjit Deka, Chinmay K. Thakuria, Ishant Hazarika, Priyanshu De. A special thanks to the team of Think Tank and its president, Arnav Das, our technical operator, Vishwaroop Das, our sound engineer, Mosam Da, without whose efforts we could never have got such wonderful sound effects during the entire event. A special word of thanks to our beloved Sangeeta ma'am, Shatabdi ma'am, and Subhashri ma'am for the splendid choreography of the dance as tribute to our honorable rector sir. I'd also like to thank our dance in charges for their dedication, efforts in preparing all our young performers for the splendid performances that left us all in awe. Your passion, commitment has made the performances unforgettable. I cannot express my enough gratitude to our principal ma'am, director sir, for their encouragement, which were pivotal in the success of this event. None other than, last but not the least, I have to express my heartfelt and special thank you to our dearest Paramita ma'am, who had conceived this entire beautiful idea and theme, Boonde Hayat Bhi, Qayamat Bhi, and has been an epicenter for all of us of knowledge throughout this journey. Ma'am, without your vision, leadership, and unwavering support, this event would not have been possible.
Your dedication has been a beacon of inspiration for all of us. A lovely thank you, a beautiful thank you to our enthusiastic students and lovely parents for their cooperation, dedication, without which we would never have been able to conduct this entire event. Finally, I'd like to extend the deepest gratitude to all our teachers, to all our helping staff, technical members, and each and every person present here whose tireless efforts, dedication, and creativity have made Spandan truly shine today. As we close this chapter, let us take a moment to cherish the memories created today and carry them forward with pride and joy. Thank you all. So before we conclude this event, do we have all our teachers on the stage with us? Thank you, Director Sir. Okay. I think we can start. Sir, can we play? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि